can I ask Seema? Yes, yes. Yeah. So generally in a sales one-on-one, how do we start? How do we start? Discovery. Discovery, na? So depends. 3, 4 answers. One is in your form you have mentioned this. Can you elaborate it more? Okay. During our conversation you were saying. So ये warm up होने के बाद, how are you? Which city you belong to? Okay. कैसे चल रहा है 2 लाइन में? And Okay. then okay, so tell me more about your present challenges if you have any. क्योंकि कुछ लोग डिफेंसिव हो जाते हैं. नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वगैरह. हमारे कॉल पे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताओगे. वहां से ओपन हो जाता है. एंड देन उधर से फिर ढूंढो क्या क्या पूछना है उसके. So we allow them to talk first and then Yes. pick up their pain points. And हम then कम बात करेंगे. हाँ. Let them speak. Okay. And we are at any point not going to give them an idea of what we are planning for them in future, or we should give them an idea. End में. End में we are supposed to give. So end में you are going to specifically tell 3 months program, 12 sessions, this is the fees. वो technical details हो गए. But till that time what you're doing is building the value of what you do and the importance. तो उसने बोला मेरे ये चैलेंज है, तो आप उसका डीप डिस्कवरी और करोगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. कैमरा शाय मतलब क्या हो. फिर उसको मैं यूजुअली मैं ये जानने की कोशिश करूंगी, डज ही नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑन कैमरा, या फिर मुझे वहां से शुरू करना है, या फिर अभी ये सिर्फ कैमरा का टॉपिक है तो उसके एंगल्स देखो क्या क्या हो सकते हैं. कि किसी किसी को लगता है नहीं नहीं मैं क्यों जाऊं कैमरा पे वगैरह, वो वाला मुझे कोई जरूरत नहीं है. एक ऐसा टेढ़ी लेडी मुझे मिली थी. नहीं नहीं मुझे तो ऑफलाइन में ही मजा आता है. फिर करो ऑफलाइन. डिस्कवरी के पहले की बात है, मेरी फ्रेंड ही है कॉलेज की. सीमा ऑफलाइन ही मजा आता है. पैसा कितना कमाती हो? कुछ नहीं. ऑनलाइन नहीं जाना है. ऑफलाइन बहुत अच्छा होता है, उसमें लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन. सो शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं उसको. इस डिस्कवरी में यू कैन एड्रेस की कैमरा प्रॉब्लम मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या है. अगर उसके बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे पता है कि ये बहुत जरूरी है, देन इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू कि उसको इसका इंपॉर्टेंस पता है. एंड देन यू आर केटरिंग की ये प्रॉब्लम्स होती है. सो यू साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो शेयर द स्टोरीज में he is asking you a question, you are giving the answer but not directly question answer type. You are indirectly sharing the stories of your own stories. हाँ मैं भी ऐसे थी. Sometimes you don't want to feel you don't feel comfortable sharing in your name. Share it in your client's name. Your story. एक मेरा ऐसे क्लाइंट था, उसके साथ ऐसे हुआ. सम स्टोरीज नॉट नेसेसरी कि वो क्लाइंट की होनी चाहिए, बट दोस्ती में आपने किसी को कुछ हेल्प कर दिया एंड इट वर्क फॉर देम लाइक मैजिक. एक लाइन बता दिया, देन से दैट वन ऑफ माय क्लाइंट वाज गोइंग थ्रू दिस बट देन नाउ ही इज डूइंग दिस. सो यू डोंट गिव द व्हाट डू यू से Solution. ए एंड बी के बीच का जो है डोंट शेयर दैट. Okay. ए पे था, बी पे गया, वेयर दे वांट टू बी. Got it. Simran, very nice questions, Madhuna. These are very important. Yes. Okay, what we can do is to start with just 30 seconds rapid fire. Introduce yourself. Let's start with Aishwarya. Aishwarya, just like you're looking at her hair, you're looking very beautiful, Aishwarya. So start. I was just switching the lights, the color of the lights. Okay, hi everyone. My name is Aishwarya and I am handwriting analyst, therapist, and life coach. And I have been in contact with Seema for around more than 6 months now. I don't know. Yeah, it could be. Yeah. So it's been an awesome journey. I just got my confidence lifted up so much, and I have helped like a lot of clients now. I have got high ticket clients. I've started getting it, and so yes, I'm enjoying very much. Madhura, you can now what you can do is take the name of the nominate the other person and start. Aishwarya, take some name. Okay, let's take Simran. So very good evening, everyone. I'm Simran. I'm from Delhi, and recently I started this journey as a life coach. Before this, I have been going through some kind of a mess in my life. So now I want to give that mess as a message to this world. Wonderful. सिमरन एक काम करो, अपना वो जो वीडियो है ना, मेरा फेवरेट वाला वीडियो, वो ग्रुप में डाल दो. लेट एवरीबॉडी सी हु यू आर. Sure. I'll just put it across. Sure, I'll just surely put it across. I love that video of Simran. So she's nominating me. Hi, everyone. I'm Madhura, a healer and a healing coach. So I've just launched myself 20 months back. And I started with my low tickets and sold them massively, reached about 3,000 people. And there came a time when I felt that now it's something else. Let's do something else. And that's when I found Seema. And I did many researches with the high ticket coaches, and they were very good technically and all that. But for some reason, I connected with Seema. I felt that it was very genuinely what she's going to teach, and very in a simple way she's going to teach. And I found her ad also absolutely apt
which touched me exactly where I was. Like she said, you're earning in peanuts and it's not reflecting in your bank account. So I felt, yes, there's a huge number of people who are learning from me, but the bank account was reflecting. I was happy with that. But now it was time for high ticket, and that's why I'm here learning. Today's session was sixth session with Seema. Sixth, correct? Sixth session. Yes. Sixth session with Seema. So I've learned the ad making, the scripting, the niche clarity is done. My posters are designed, my Calendly is set, my message is set, and a few discoveries I've done. So I'm learning how to take the discovery for high ticket, and I'm getting out of that desperate zone that what happens after the discovery. I mean, I was so used to getting those clicked immediately because it was low ticket. So I'm learning from Seema that Seema says that high ticket is premium clients and they will happen. So I'm in that zone at the moment. Wonderful, Madhura. There is so much I can speak about you. I'll come to that. Nominate the last person in the group now. Kshitij. Kshitij, can we have you on video? Don't get scared with all the ladies. You can speak. No, I think we should go off camera so he feels confident. He is very confident. I'm having my dinner. Okay. Okay. So apparently I'm doing this, so I cannot come on video. One sec. Are you able to see me, guys? Yes. Okay. So this is Kshitij here. I'm currently working as agile coach. Okay, and I want to be a life coach. I tried this 5 years before. I'm an NLP practitioner, and I'm a trainer come coach. But now I'm take that as a footage as a life coach. Okay, and for that I registered with Seema's course. And last, I think we have 3 sessions. I have a couple of questions with Seema, and looking positive. And I hope, not hope, I'm sure that in all 12 sessions I'll be launching myself as a life coach on financial abundance and help people to come from financial crisis to financial abundance without without giving on their current responsibilities, dreams, and desires. Yeah, that's Super awesome. You gave me next point now in the meeting. Madhura was asking me just before this call, we had a one-on-one session with Madhura, and she said, "What is the agenda?" I said, "I don't know. You are going to give me the agenda." So I got another agenda in this call now. Next question to all of you is just in one line, whatever that marketing message we have created for you, all of you will share one by one. Next rotation. Kshitij, nominate the other person. Yes. Aishwarya. Okay. Could you please repeat, Seema? What did you just say? Your marketing message. I help so and so and so and so without this. अभी actually वो change हो चुका है. Okay, whatever it is. अभी it's like I help coaches, healers, and therapists to break their barriers in their life without needing to have tech expert knowledge or having a lot of followers. So it's going that way. Wonderful, beautiful. Madhura. Okay, Aishwarya is going to nominate the others. Okay, Madhura. I am Madhura. Teach and aspiring. I help aspiring healers earn a lot of money and blessings without having a lot of fame, name, or Instagram followers. Simran. So I help married women to discover and embrace their authentic self without being judged by others. Wow. Yes. So I am going to share one strength that I noticed specific to each individual. Okay. So Simran ka, I was talking about that video. Kitna minute ka video? I was 6 minutes. It's 11 minutes, yeah. 11 minutes. I want all of you to spare that 11 minutes and watch that video. Why? Because that video is, I don't know, it is only me or everybody will feel it. And when I watched that video, it was like somebody who is having huge experience, बहुत बार public speaking किया है, and I got to know that that was her first public speaking assignment. So you watch, and whatever great things you notice about it, put in the comments. Can you all do that? Promise? Whatever you notice, you're going to mention. It is not just to make her happy, not just because of the assignments. Find what is great about that video. Hi, Neha. हाय मैम सॉरी मेरा अनम्यूट था कोई बात नहीं नेहा अभी अनम्यूट है तो चलो काम करो गाड़ी चला रहे हो बैठे हो साइड में मैम बैठी हूँ हाँ तो 30 सेकंड्स में अपना इंट्रोडक्शन दो हाय माई सेल्फ नेहा बाफना मैम आई एम लाइफ कोच और नॉट आई डोंट नो
I'm Okay. trying to become life coach Hmm. in guidance of Seema ma'am. Hmm. I'm from Indore, Madhya Pradesh. Hmm. So one thing, Neha, you will do is with anybody and everybody, you will start saying that I am a life coach with huge conviction. Why? Okay, ma'am. Why you are already a life coach? Do you coach your kids? Yes, ma'am. Have you taken some great decisions in your life? Yes, ma'am. Have you broken your own barriers and comfort zone? Yes, ma'am. Have you done something like, okay, have you stood for yourself at any moment of time in your life when people were against you? Yes, ma'am. So you have done a coaching to yourself, right? Yes, ma'am. Sure. And now one question to all of you. Give me the true answer, what you feel. Coaching your own self versus coaching others, which is more easy? Coaching ourselves. Or other answers? Yes, I Coaching agree others. to that. It's easy to coach others because we are not ready to accept ourselves first of all, and then Correct. changing is a difficult part of it. And we can give the gyan to other person, that is very easy. And working on those things and on daily basis is a difficult thing. Exactly, ma'am. Yeah, for Madhura, coaching herself is easier because I know she's a very different kind of a student. As a student, she's very, very receptive. And now she's in the different zone of getting things done from people, right? You are working on yourself so far, a lot. And you have definitely fine-tuned so much. I wanted to talk about her. Let's talk about her first. She has great credentials. You're going to share those with your own voice. So let's hear from her after Neha. Neha, so do you agree on these pointers? You are a life coach already. Yes, ma'am. I am a life coach. Are you sure? Yes, ma'am. Sure. 100%. Why are you a life coach? Sorry, ma'am. Why are you a life coach? Why I am a life coach? Because Yes. I want to change myself. Um, I want to change myself. I have changed myself actually, Yes. and I And want to go in life coaching field, ma'am. you want to go nahi. See, don't talk about future. You're already into coaching. How Simran was giving the reasons why coaching yourself and coaching others versus coaching others. दोस्तों को बताना बहुत इजी होता है. अरे ये करना यूजुअली ये करना बिकॉज यू आर नॉट इन टू द सिचुएशन इन्वॉल्व इमोशनली. डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो पेशेंट का ऑपरेशन इजी है या खुद का ऑपरेशन इजी है? बताओ कुछ तो. पेशेंट का. पेशेंट का ऑपरेशन इजी है क्योंकि वो आउट ऑफ द जोन है. ऊपर से अगर वो खुद की बच्ची हो, खुद का बच्चा हो छोटा, उसका ऑपरेशन खुद डॉक्टर को करने को कितना इजी है डिफिकल्ट है. It's difficult Difficult. at that moment because emotions are involved with the kid. यस. और जब हम तो पूरी जिंदगी भर एज अ लाइफ कोच हमारा सारा इमोशन से ही जुड़ा हुआ. टेक्निकल स्किल्स इतने ज्यादा नहीं लगते हमारे इंडस्ट्री में. इट इज ऑल इमोशंस. सो खुद को जब कोच करना है नेहा, खुद को एज अ थर्ड पर्सन देखना है. पता है कितने सालों से मैं ये बोलती थी कि दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई कैन डू, लुकिंग एट योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन. बिल्कुल. मतलब वहां पे रह के भी दूर रहना है, कैसे पॉसिबल है? यू आर गोइंग थ्रू दैट अप एंड डाउन ऑफ द इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, आप लो सेल्फ एस्टीम से जा रहे हो. पहले आपको पता नहीं था. पागल थे हम लोग. हमें कुछ नहीं पता था लाइफ कोचिंग के इंडस्ट्री के बारे में, है ना? सब लोग हमें से थे. बिफोर वी एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री ऑफ हीलिंग, लाइफ कोचिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी है, हम स्कूल कॉलेज में अलग थे. तो तब तक हमारे कुछ खुद के इश्यूज होते थे. पता नहीं था तब तक बहुत अच्छी थी जिंदगी. पता चल गया यू आर द पर्सन हु इज अ पेशेंट एंड यू आर द पर्सन हु इज अ डॉक्टर. कितना डिफिकल्ट है. यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, यू फील लो सेल्फ एस्टीम, यू फील लो सेल्फ वर्थ. यू नो दैट इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू अहेड एंड यू आर रिजॉल्विंग इट. पेन भी ले रहे हो, दोनों तरफ का पेन ले रहे हो. खुद को बीमारी से ठीक करने का और बीमार होने का. डू यू अग्री विथ मी? वी आर डूइंग. खुद पे काम करना इज वेरी डिफिकल्ट. और अगर हमने ये किया है सबने, दैट इज व्हाई यू नो कि लाइफ कोचिंग जैसा कुछ है. करेक्ट. खुद को इतू सा भी मिला है 1% ऑफ व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम समबडी. सो यू हैव वर्क दैट गिव्स यू कंप्लीट अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी. क्योंकि मैंने सीखा बहुत है बट मैंने इंप्लीमेंट कुछ नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है. मैंने सीखा बहुत थोड़ा सा है बट उस थोड़े में से मैंने 50% इंप्लीमेंट किया है. आई डिजर्व a reward for this. Do you agree with me? Just a minute.
So Neha, I want you to say, एक लाइन मैंने दिया था, मैजिक मंत्रा मैंने बहुत लोगों को दिया है. I am an extraordinary coach on this planet. Yes, ma'am. I am बोलो an extraordinary coach on this planet. थोड़ा I अच्छे am the से, only जैसे extraordinary coach on this planet. बोलो, फील करो इसको. Yes, ma'am. Ma'am, I used to say daily, ma'am. Actually, I used to see that angel numbers, and जैसे मुझे angel numbers मिलते हैं, देखते हैं, and I used to see कि I am a successful and loved life coach. I have became, मतलब मैं बन चुकी हूँ सक्सेसफुल और लव्ड इस पूरी दुनिया की. मैम Very डेली good. डेली हुई. हाँ, तो अभी ऐसी गड़बड़ मत करो. जब लोगों के सामने जाओगी तब ये मत बोलो आई डोंट नो इफ आई एम अ लाइफ कोच और आई एम नॉट. मैं बता रही हूँ, योर कोच. आई एम गिविंग यू वैलिडेशन. यू आर अ कोच ऑलरेडी. मैंने तो क्लाइंट नहीं किए, मैंने तो पैसा नहीं कमाया. आई गिव यू द रीजन ऑफ व्हाई यू आर अ कोच, राइट? हाँ नेहा, मे बी सम Yes, ma'am. नेगोशिएशन. सो Yes, ma'am. मैंने तुमको रीजन तो दे दिया. पेमेंट, क्लाइंट, ये सब बाद में आएगा. फर्स्ट खुद को मैंने इम्प्लीमेंट किया है क्या, मैं जो लोगों को ज्ञान बांट रही हूँ, एंड दैट यू आर डूइंग इट, सो दैट इज व्हाई यू आर अ कोच. इज दैट अ सफिशिएंट सैटिस्फैक्टरी आंसर फॉर यू? Yes, ma'am. Sure, it's a satisfactory answer for me. तो मुझे कभी भी कहीं पे भी मैं नहीं भी रहूंगी तो यू विल टेल पीपल आई एम अ कोच, लाइफ कोच. Sure, कॉन्फिडेंटली ma'am. बोलो. आगे देखा जाएगा Sure. क्या होता है. अगर फंस गई तो मुझे कॉल करो. Okay, ma'am. I'm sure. ओके. नेहा की स्पेशलिटी ये है कि नेहा बहुत इनोसेंट स्टूडेंट है. बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट, सो आई एम टेलिंग यू दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. मैं कभी कभी बहुत गुस्सा होती हूँ नेहा के ऊपर. बताओ नेहा ऐसे, तो बता दिया. और Yes. नेहा ने हर चीज बहुत पॉजिटिवली ली है, एंड उससे वो आगे जाएगी. बस उसको सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे जो अभी नहीं कर रही. नेहा, सारे बैकलॉग्स खत्म करके सबके सामने मुझे कमिटमेंट दे दो, जो भी बैकलॉग होम असाइनमेंट थे वो खत्म करके मुझे जल्दी से जल्दी मेरे सेशंस पे चालू करो. Yes, ma'am. आज है वेनसडे. इतना वो हो रहा है अंदर से कि बहुत जल्दी करना है स्टार्ट. करना पड़ेगा ना, अपने आप नहीं होगा. Yes, ma'am. ठीक है. अभी मधुरा अपने क्रेडेंशियल्स बताओ, जो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट. Like, as in about myself? हाँ, वो एक स्लाइड पे था एंड आई सेड इतना है लेकिन दिखा नहीं सकते, याद आया? Yeah. Happily married with a son. I'm a gold medalist to Karnataka University. I have done 500 plus television live shows. I have impacted 10,000 people live in the last 20 months. I have 3,000 plus paid customers. And I have created 70 healers, each of them who have learned 30 plus healing modalities. And I'm personally certified in 30 plus healing modalities. And my mission currently is to create one healer in every house. Wonderful. And now I'm on a mission to launch my high ticket coaching. And that's why I'm here. Awesome. I have a question for you, Madhura. You have a good experience of sales, and now you are talking to people. Seema, I also have my own company, which is called Body Vedant in Bangalore. It's 8-year-old, and it is to do with outer beauty, which is all to do with weight loss, skin treatments, hair treatments, beauty, laser, makeup, academy, all of that. I have 15 employees over there. That is to do with my offline business is to do with outer beauty, and my online business is to do with inner beauty. Oh, so there are so many ladies here. Yeah. Can connect with you. You can book a one-to-one discovery session with her. Yeah. What I was saying, Madhura, yes. So you were doing online, you were doing low ticket, and now you're doing high ticket. Yeah. One thing very prominently we noticed in people's behavior towards you is you were saying कि 3,000 में जब मैं करती थी, before you do your first discovery, share that story and also your shift. So I have courses starting from 99 rupees up to 30,000 rupees. So 99 to 999 were being sold on my landing page directly. So people come and they buy and they go, and I don't even know that it has happened. But then I started doing webinars, and I used to start selling 3,000 rupees course, which is called Heal Yourself. So I give them 21 steps to heal their own life, whoever has messed up their life. And for that 3,000 rupees, I used to do a 2 hours webinar, and that 3,000 rupees, people used to call up and say, can I pay you in 2 installments? Can I pay you 1,000? And I used to think, कितना मुश्किल है भाई 3,000 निकालने के लिए. But then in the webinar there used to be 30 people who pay up, and that was matching up. And then the people whom I was associating with, when I used to ask them कि क्या करूं, कोई installment मांग रहा है तो क्या बोलना है, तो they were like, वैसे भी आप recorded course दे रहे हो, तो कितने सारे लोगों ने पूरा दे दिया,
तो कोई इंस्टॉलमेंट मांग रहा है तो दे दो, आपका कुछ नहीं जाता, जितना आ रहा है आने दो. So my mindset was और कम करना है. Then when I used to talk to people that how do I improve my sales, they used to say 2000 कर दो. And I used to be like, is that true? I need to reduce my prices to reach out to more people. And then when I met Seema, she totally changed me and she said, "Nahi, there exist people who pay 1 lakh, who pay 80,000, who pay 2 lakhs. It's just that you have your shop." And she literally said that Starbucks in a village. And that's why people are not paying you. She said, you are a Starbucks, but you don't have your shop in a mall. You have it in a village. And that's why people say, oh my God, 300 rupees for a coffee, it's too expensive. So you're not attracting that kind of people. You're already attracting people who are low ticket, who are coming for 399, 499. And they said, yes. And I kept asking Seema, will there be people who pay 1 lakh? But then she said, yes. And I said, okay, shall I start with 60? Shall I start with 70? She said, no, it's 1 lakh. And assuming you are not getting sales, you make it 1.5 lakh. And then you will get sales because maybe the universe wants you to charge more and not 1 lakh. I said, okay. And then I started doing my discoveries with my existing people. And then there came people who would just pay me advance of 5,000. And they said, okay, tomorrow I'll pay you. And they didn't pay up the remaining 95, but they paid 5,000 so effortlessly. I did a one-on-one discovery and that person paid me 5,000. And then I got back to Seema. I said, 5,000 aa gaya, what next? She said, 5,000 kitna aasani se aaya. For 3,000, you're struggling with even, 1,000 installments and stuff like that. Now 3,000 is coming, 5,000 has just come like this as an advance to 1 lakh. So definitely your frequency has improved. And the same, entire my mindset has changed. Like I also give crystals. Earlier, I used to feel, I think I should give them at little lesser cost. Now I feel that why should I give them at lesser? In fact, my quality is good. My courses quality is good. My camera quality is good. My content is good. My number of videos are more. Why should I charge them less? This is what has changed with Seema. Earlier, I used to feel maybe I have to charge them less, but I don't know why I was like that. If you ask me, maybe the people that I was connected with taught me to be like that. They said you should bundle up courses, put 5 courses for 999, things like that. Then I started feeling, yeah, maybe people don't have money and that's why they want it like that. But then Seema made it very clear. Get out of this low ticket, let that be as an asset and come to the high ticket. And I also felt like that, when I come to high ticket, I have a choice to give them these courses and I can choose whatever I want from them. They're anyway existing, so I can use them. So definitely my mindset has changed from being the low ticket coach to the high ticket coach. And I took that decision myself to stop my low ticket sales. Absolutely, because that was still keeping me with that energy that I'm still looking for 399, 499, 999, and I'm shifting to the high ticket. So I stopped that, put it on hold, believing in myself, believing in the universe, believing Seema, and I know I will do it. And I will share the news with all of you very soon that I finally took my first client. Yes. Superb, superb. And the beautiful part of this is in this 5,000, that client asked you, how much should I start with, right? Yeah. How much Yeah. should I pay now? And How much- she suddenly said 5,000. Imagine if you had said 20,000, he would have paid you 20,000 as a deposit. Yes. And you did 3-4 discoveries. And I think, you did not hear anybody saying, 1 lakh ka ye karo, 80 crore, 70 crore, 50 crore. They which didn't is say too- reduce it. Maybe they asked me for installments, and I was like, 2 installments is okay. Nothing more than that. So nobody asked me to reduce the price. So that's again gave me a feeling that, yes, so they are okay with 1 lakh. Maybe they're not paying it now. Maybe they're not, yeah, but they're okay with it. At least they're okay with the number. Nobody said it was too expensive. They said it was expensive to them. And I'm happy that Seema taught me that being expensive is good. Being called expensive is good because that's again a premium feel that, okay, yes, I am 1 lakh. It's up to you. You can afford me or you don't afford me. So that gives a different kind of confidence, which I was not in that zone. I was feeling like, I should tell people, no, if you find it difficult, it's okay. I'll reduce my prices, but then you should be able to afford it. So there is a difference in the way I look at it. So yes, if I don't do it, somebody will do it. So why don't I do it? Am I right, Seema? Yes, absolutely, absolutely. Any questions anybody have after this conversation? That questions that you are conflicting with yourself, something like that. This is the friction I'm facing in my mind. No? You agree with whatever we are discussing, Madhura and me? Yeah. Seema, one So question now is- you got, yeah, Kshitij. So what, maybe sometime people may ask for one is discount, that's first part. Second, they may ask for installation. So what things we have to limit? Is it 1, Yeah. 2, 3 or what? That's first question. Mhm. Second thing is, whatever we discuss the scope in our discovery, okay? So that scope may they ask to change in between. So how to handle that scope? In between, during the discovery or during the program? No, during the program. Okay, that is why we are customized, huh? Hmm. Sometimes here you are, how many? 5 people are there. My coaching, if you see my recordings, my coaching with every one of you is totally different.
Totally different. Though in the first week we do niche. If you see my niche idea, my niche explanation, my niche workout with Simran is different, with Madhura is different, with Neha is different, because receiving for everybody is different. Sometimes I need to spend more time on script with somebody. Sometimes I need to spend more time on discovery with somebody. That is absolutely okay. But my question That is why we are special and we are charging high. my question is, maybe whatever we discuss at the time of discovery is it may require 12 sessions, but Hmm. based on the scope change, it may need 2 sessions more. So in that case, how we want to deal with? Shall we ask that? That is completely up to you. That is completely up to you. If you feel you want to, your inner voice is telling you, give 2 more sessions, no problem. See, basically what I'm doing here is, I want all of you to do high ticket coaching. And in that, chote mote jo rules hai, that you have a complete freedom to follow your intuition, not brain and logic. When I say 12 sessions, all of you might be remembering जिनका course complete होने को आया है या ज्यादा sessions किए. Official Zoom sessions, I said these many. But beyond that, over the phone call, sometimes I keep talking to you and it goes for 1 hour. How many of you have experienced this? कि हमने phone पे 1 घंटे से ज्यादा खा लिया है, and that is not counted as your session. So I give because it is required and I love it. So you can see, high ticket मांगो हक से. देने के टाइम पे जितना देने का मन करता है दे दो, कोई प्रॉब्लम है ना. खुश हो जाएगा बंदा, 2 सेशन मुझसे ज्यादा दिए. एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आपने किसी को फ्री में 2 सेशन ज्यादा दिए, कोई क्लाइंट अगला आपका बिना डिस्कवरी के भी क्लोज हो सकता है. आई हैव क्लोज्ड अ डील ऑफ 1,30,000 इन जस्ट 10 to 15 minutes. क्लोज्ड अ डील ऑफ 30,000 इन जस्ट 5 to 10 minutes. क्योंकि पिछले का कर्मा, कभी किसी को ज्यादा सेशंस दिए होंगे. You got your answer, Kshitish? Yeah, in some cases, some person, Yes, as you Kshitish. said, we have to plan for 12 sessions. Okay. Yeah. Some people may say, okay, I don't know, may say that I want to go for 5, something sort of. ना. See, Okay. I have to take your, आपका कोर्स आधा ही हुआ है, so हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं. As an Yes. expert, you are going to decide. हमारा डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, हमें ट्रीटमेंट कितना चाहिए, डोसेज कितने चाहिए, कितने दिन का रेसिपी है, कौन डिसाइड करता है, पेशेंट या डॉक्टर? Doctor. So you are going to do this. More needed after the service is different story. But discovery में जो commitment है, that you are going to decide these many sessions are must. आधा अधूरा क्यों छोड़? ये ऐसा नहीं है कि 1 लाख का प्रोग्राम है 12 सेशंस का, तो 6 सेशंस का मैं 50,000 देता हूँ. क्योंकि why you are not allowing them to decide this? Because they don't know what they need. You know, right? Right. Yes. Okay, installment and discount. No for discount and installment yes. टेक्निकल आंसर, स्ट्रेटेजिक आंसर पहले मैं देती हूँ, फिर स्पिरिचुअल और इंट्यूशन के बेसिस पे आंसर देती हूँ. स्ट्रेटेजिक आंसर इज नो फॉर निगोशिएशन. दिस इज माय फाइनल प्राइस. क्यों? बिकॉज आई डोंट बिलीव इन मैनिपुलेटिंग पीपल. जो एक फिक्स है, एंड एज आई सेड वी आर प्रीमियम कोचेस. खुद को ये डाल दो, स्टारबक्स, मॉल, ब्रांडेड स्टफ, एप्पल, दैट लेवल यू आर इनटू कोचिंग इंडस्ट्री. तो एप्पल कभी अपने मोबाइल का प्राइस कम करेगा? ब्रांडेड चीजों का प्राइस फिक्स होता है, एंड दैट गिव्स देम द फीलिंग ऑफ सेफ्टी. आपने अगर कहीं से कोई चीज खरीदी, दिस हैपेंस विथ मी मोर ऑफन, व्हेन देयर इज नो नेगोशिएशन पॉसिबल. जिस दुकान में लिखा है फिक्स्ड रेट, आई रियली लव बाइंग फ्रॉम देयर. बिकॉज जब मैं डिस्काउंट करके घर पे आती हूँ, मुझे वो दिमाग में डाउट रहता है, कम मैंने और थोड़ा खींचा होता तो हो जाता था. मेरी दोस्त मुझे आके बोलती है, अरे 5,000 का तू 4,000 में लेके आई, मैं तो 3,000 में लेके आती. अभी डिस्काउंट उसने दिया मुझे 1,000 का, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी. ऊपर से फिक्स्ड रेट में मैं जाऊंगी, डिस्प्ले पे लिखा है फिक्स रेट, आई एम वेरी हैप्पी. ये तो इसके हिलने ही वाला नहीं था, तो कोई मेरे दिमाग में इफ एंड बट है ही नहीं. आई एम हैप्पी विद द परचेज. डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yeah. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. नो डिस्काउंट. इंस्टॉलमेंट्स आइडियली, जो आंसर मैंने आप लोगों को दिया है वही आंसर आप दोगे. आंसर ये होगा कि यूजुअली आई विल रेकमेंड यू टू पे द फुल अमाउंट इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू. क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. आज अगर आप तो क्लाइंट को ऐसे नहीं कर रहे, सो इन योर केस यू कैन से आई यूजुअली टेक इंस्टॉलमेंट. आप क्लाइंट नहीं कर रहे हो ना, मतलब लाइफ कोचेस नहीं कर रहे हो, आप इनको इनकम का कुछ ये नहीं कर रहे. तो आपके लिए आंसर ये होगा कि आई वुड रेकमेंड पेइंग मी फुल. रीजन, आई वॉन्ट योर फुल कमिटमेंट. मेरा तो है, मुझे पता है. जब बंदा व्हाई डू यू वांट इंस्टॉलमेंट, हाँ मैंने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के कोर्स पे ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डू यू वांट इंस्टॉलमेंट्स.
वेदर मे बी आपको ऐसे लग रहा है कि लेट मी ट्राई विथ सम स्मॉल अमाउंट, ये कैसे जा रहा है, सही जा रहा है या नहीं, इज माई डिसीजन गुड, एंड देन आई पे यू द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, या फिर जेन्युइनली आपके पास पैसा नहीं है। तो 1 घंटे के डिस्कवरी के बाद हमारा इतना हक तो बनता है कि बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ आई फील लाइक कि थोड़ा सा मैं ट्राई करूँ। तो सिंस वी आर इनटू माइंडसेट इंडस्ट्री, यू नो ट्राई वाले माइंडसेट से जो बंदा शुरू करता है और जो फुल फेथ पे शुरू करता है, दोनों में रिजल्ट कहाँ पे ज्यादा आएगा? Full faith. फुल फेथ, करेक्ट? तो when you pay full, you are 100% committed, and the results that I'm going to give you or we are going to create, they will be 10x higher. ये एक आंसर है। दूसरा आंसर है, अगर आपके पास पैसा है ही नहीं, मैं ये आंसर देती हूँ, आई डोंट बिलीव इन फोर्सिंग द थिंग्स, गोइंग अगेंस्ट नेचर, देन यू टेल मी व्हाट इज योर फाइनेंशियल सिचुएशन टू पे मी इन इंस्टॉलमेंट्स। बंदा सच में बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यू गिव द डिस्काउंट्स, तो कैसे डिस्काउंट्स दो? मैक्सिमम 2 डिस्काउंट्स दो। अगर 50,000 का प्रोग्राम है तो 25-25, और वो भी कैसे? 3 महीने का प्रोग्राम है तो 1 महीने में 50,000 कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज टेंटेटिव, द मोर यू मूव फॉरवर्ड आपको अंदाजा आएगा। अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। कभी कभी इंट्यूशन बता देता है कि 50,000 3 महीने का आएगा तो भी मैं ठीक हूँ, तो वो क्लियर कट प्लान रखो कि इस डेट पे आप इतना इतना करोगे। एंड सी, सिंस वी आर इनटू हाई टिकट, एनी अमाउंट यू गेट इट विल मेक यू इनिशियली वेरी हैप्पी, है ना? 50,000 का आप क्लोज करते हो और उसमें से 15 के 3 इंस्टॉलमेंट है, 20-20-15-15, इट इज अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट विद 3 महीने के प्रोग्राम के लिए। हर महीने के पहले दिन को अगर आपको 20 मिलता है, 15 मिलता है, बट अंडरस्टैंड द पर्सन, उसकी डेप्थ कितनी है, वो मैच्योर कितना है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट बी चेजिंग एंड बेगिंग बिकॉज यू आर अ कोच। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. You should not be in the position where you are needy. You should always have an upper hand. जिस टाइम पे यू फील कि अभी सपोज 1 लाख का प्रोग्राम है, इट इज इजी टू कैलकुलेट, 12 सेशन है, 6 सेशंस के बाद प्रोग्राम को होल्ड करिए। यू डोंट वांट टू बी चेजिंग देम ना फॉर मनी। आपका रिस्पेक्ट क्या रहेगा, एंड इतना वेस्ट एनर्जी कैसे करोगे? बट व्हाट आई डू इन दिस, पर वो करना पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि आफ्टर लाइक 6 सेशंस एक आपका रेपो, एक होता है ना, कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है ना, व्हेन द अदर पर्सन सेज मे बी कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, मे बी लेटर ऑन he'll give and he needs lot of this coaching, तो फिर उस हाँ सिचुएशन में बट उसको वो सीरियसनेस क्रिएट करो ना, आपसे ज्यादा उसको सीरियसनेस होना जरूरी है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन सेल्स। हम लोग सेल्स में किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, दिस इज द राइट टाइम, अभी कर लो। हम लोग डेस्परेट होकर सेल्स नहीं करते ना। मैंने सबको यही सिखाया कि बिल्कुल डेस्परेट मत हो जाओ, अपनी चेयर पे बैठो, जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बता दो और शांत हो जाओ। व्हाई? बिकॉज वी वांट दैट इनर डिसीजन ऑफ फ्रॉम देमसेल्फ। मेरे अंदर से वो चाह आनी चाहिए कि मुझे करना है, बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं। तो जब आप 6 सेशंस के बाद आप होल्ड हो जाते हो, आपको लगता है कि उसको जरूरत है, बट वो आपको लगता है, उसको भी तो लगना चाहिए। और अगर उसको लगेगा तो ही विल अरेंज द नेक्स्ट मंथ। क्यों नहीं अरेंज कर? मैंने ऐसे केसेस में क्या किया है, आई हैव टोल्ड दिस पीपल टिल द टाइम यू अरेंज द नेक्स्ट पेमेंट हमारे ऑफिशियल जूम सेशंस नहीं होंगे, बट मुझे इंसान को छोड़ना नहीं है, बिकॉज दैट इमोशनल कनेक्ट हैपेंस, एंड हमारा पहला है कि मुझे कंट्रीब्यूट करना। तो मैं उनको बोलती हूँ कि इफ यू नीड हेल्प, कोई लीड आता है कुछ है, फोन पे हम कॉल करेंगे, आई विल बी देयर फॉर यू, आई विल सपोर्ट यू। इट इज नॉट दैट मैंने छोड़ दिया पूरा, अभी मुझसे बात मत करो, ऐसा नहीं है। यू कॉल मी, यू आस्क मी योर डाउट्स, बट ऑफिशियल जो 1-1 घंटे के सेशन है, जो मेरा टीचिंग पार्ट है, दैट विल बी ऑन होल्ड। गुड डील, क्या लगता है? दोनों के साइड से बैलेंस्ड है, क्लाइंट एंड कोच, हम दोनों को देखना है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप सेशंस करते रहोगे, पीपल विल टेक डिसएडवांटेज ऑफ यू। आपने फिर हाई टिकट क्यों कराया? 1 लाख का प्रोग्राम क्यों बनाया? खुद को इतना अपग्रेड क्यों करा? अगर आप 12 सेशन 50 में देके आ रहे हो, ऊपर से आप अपने साथ कितना कॉन्फ्लिक्ट करा रहे हो। सेलिंग के टाइम पे यू आर सेइंग कि मैंने 1 लाख का 12 सेशन का प्रोग्राम बेचा, डिलीवरी के टाइम पे यू डिड 12 सेशंस एंड यू ओनली रिसीव्ड 50। What will be the motivation for you? You will lose your self confidence after that. You will feel very bad about this industry. हमें वो लेवल पे नहीं जाना। और दुनिया के सारे बड़े बिजनेसेस देखो, बड़े पेमेंट नहीं है, होल्ड पे रहते। एंड वी आर इनटू अ बिग इंडस्ट्री, वी आर इनटू अ प्रीमियम इंडस्ट्री, है ना? क्रेडिट कार्ड कैसे चलता है, ईएमआई कैसे चलता है? सो इंस्टॉलमेंट और फुल के बीच में का एक रास्ता पहले निकालो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। क्रेडिट कार्ड पता है ना हाउ डज इट फंक्शन? यू गेट योर फुल मनी, बैंक उसको लोन दे, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग रेजर। क्लियर? और कुछ डाउट्स है?
I have doubt, but not doubt. I'll say question, but I don't know that we, as you said, it maybe it is part of discovery sessions. Okay, so while drafting in discovery session itself, how will know that I'm giving 10 times more value to this guy? Just the Answer belief. now or yeah. Yeah, I'll tell you. It's a very beautiful question. I feel like I'm talking to coaches. Maza aa raha hai. Before this call, Madhura asked me this question. I'm repeating the same story again. Madhura के साथ मेरा one-on-one session था. Madhura said, "What is the topic and agenda of the call?" I said, "I don't know." I said, "People will come up with something, and I'll just lead it that way." Now, tell me, we are here together. Are you getting value from this call? Yes. How many of you really tell me the truth? How many of you are really getting value? अच्छा हुआ आ गया इस कॉल ऐसे मन में Yes. आ रहा. Yeah. I did not plan, no agenda, nothing. Because अगर मैं एजेंडा रख के आती तो कैसा होता? मैं टॉपिक लेके आती. Let us discuss about niche today. ठीक है? और मैंने 4 पॉइंटर्स निकाले होते, स्क्रिप्ट बनाया था, प्लान किया होता, पावर पॉइंट किया होता. एंड देन आई एम स्टार्टिंग शेयरिंग. और या फिर मैंने कुछ भी प्लान किया होता. Many of you wouldn't have resonated with it. मधुरा अलग लेवल पे है, सिमरन अलग लेवल पे है, क्षितिज अलग लेवल पे है. ये बोलेगा ये तो मुझे पता है, दूसरा बोलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा बोलेगा ये. बट अभी क्या हो रहा है? एवरीबडी ऑफ यू इज हैप्पी, है कि नहीं? नेहा, यू आर हैप्पी ना कि अच्छा हो गया, यहाँ पे आ गए, कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा. मुझसे नहीं मिलेगा, ये बाकी के लोगों से भी मिल सकता है. किसी को सिमरन से मिलेगा, किसी को ऐश्वर्या से मिलेगा, किसी को क्षितिज से मिलेगा. माई जॉब इज टू रन द ऑर्केस्ट्रा, रन द शो एंड लीड इट. जहां पे आप लोग नीचे जाओगे, ये सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन लाना मेरा काम. बस जस्ट टच इट इन बिटवीन. So, Kshitij, I forgot your question again. What was the question I'm answering for? Yeah, the question was in discovery call, how will make sure that we will You are adding this 10x value. 10 times value. Yeah. हाँ, it is a perception. So, सारा 10x value, सब दुनिया में सब कुछ perception है. When you do a discovery session with a mindset of कुछ भी करके मुझे डिस्कवरी ही करनी है. इन ट्रू सेंस डिस्कवरी करनी है मतलब मुझे ढूंढना है कि ये बंदा फंसा कहाँ पे. मुझे ढूंढना है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड आई हैव नो लिमिट, आई हैव नो रिस्ट्रिक्शन. कैसे कैसे मैं उसको सोल्यूशन दूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर वेरी क्लोज फ्रेंड और योर कलीग whom you like. आप कोच नहीं हो, आपको लाइफ कोचिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं. वो आता है रोते रोते या फिर ऐसे ऐसे सर करके बैठा है, एंड यू आर आस्किंग क्या हुआ. यू रियली लाइक दिस पर्सन, और आपके मन में आ रहा है कि इसको मुझे मैं इस हालत में नहीं देख सकता. विल यू एड वैल्यू टू हिज लाइफ? यस और नो? यस और Sorry, नो? Simran, Yes, ma'am. can you repeat? आपका एक यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर है फैमिली में,